Hello people, welcome to my channel. I'm Iti Rathod and I am going to share with you how I remove my makeup. It is very useful because it helps keep my skin clean and again ready for makeup, and otherwise also I need less makeup if I keep my skin clean. बाल जो हैं रास्ते से हटा देती हूँ उनको. Alright, so everything is going on. There is eyeliner, there is eyeshadow, blush, lipstick, little bit of glitters left on my eye. Alright, so how do I start? This is the first step. और ट्रस्ट मी, ये प्रोडक्ट जो मैं आपको बताऊंगी ना, ये मेरा फेवरेट है. आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर पास्ट 2 years नाउ. मैं ट्रैवल भी करती हूँ इसके साथ में और ये अमेजिंग. सो दिस इज़ L'Oreal Paris Go 360 Clean Deep Cleansing Exfoliating Scrub. I use it literally every night before going to bed. और ये मेरी स्किन में काफ़ी फ़र्क लाता है, बिकॉज जब मैंने इसको रात को लगाना छोड़ा है आलस के मारे, तब मुझे ज़बरदस्त पिम्पल सिचुएशन आई हैड टू फेस. सो व्हाट इट डज इज़ इट जेंटली exfoliates dull dead cells and unclogs pore by pore, removes all traces of oil, dirt and makeup. Pores look visibly smaller and have cleaning and exfoliating, scrubbing and moisturizing. ये steps तो हर skin type के लिए बहुत important है, because obviously clean skin पे makeup बहुत अच्छा लगता है. So okay, so this comes with this scrub thing. रबर का है ये and soft, बहुत रफ नहीं है. तो मैंने थोड़ा सा ये लिया, चलिए 1 ड्रॉप. कैन यू सी दिस? हार्डली. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक coconut oil. Now this is my secret tip, which is no more a secret. I'm a big fan of coconut oil. It's cold in here. Alright, तो ये लिया coconut oil. कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं आप. मुझे पैराशूट मेरा जो है ख़त्म हो गया है, वरना मैं तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ. कोकोनट ऑयल होना चाहिए, अपने वो क्या है. ऑलराइट, तो ये रहा कोकोनट ऑयल एंड दिस L'Oreal Paris का जो clumsy me. Alright, anyway, so I will start with this. You splash your face with water, okay? Since I am lazy to go to the wash basin now, I have wet towel with me. Wet towel ko I will just pat my face with it. Okay. Now what I'm going to do is I will scrub my face with it. Very gently I'm scrubbing. Not like going crazy with it. So these are very soft strokes and rubbing movement, circular movement, whatever you call it. I didn't have to really try hard to take my makeup off. Imagine even the mascara is off. But
have this habit of making double sure that my skin is clean because बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है when you wake up next morning और थोड़ा बहुत मेकअप भी अगर आपकी स्किन में रह गया है तो your skin will look really tired. Alright, and again you will, instead of taking, so I have taken coconut oil. I picked it up from MK Retail. Virgin cold pressed Nirmal. Alright, तो ये है coconut oil just in case if you want the exact oil. Alright, तो मैंने coconut oil लिया. Anyway, तो क्या करना है आपको कि make double sure because otherwise skin फिर सुबह tired लगती है, थोड़ा बहुत भी makeup रह जाता है तो, and this makes a huge difference if you wake up with clean skin तो आपके pores भी visibly smaller होंगे. So I will make double sure by cleaning it twice that all my makeup is off. So I will dab my eyes with this cotton pad. Just so smoothly, softly, आराम से बिना rub किए मेरा आई मेकअप जो है वो निकल जाए, मस्कारा निकल जाए बिकॉज मोस्टली सबसे डिफिकल्ट सबको मस्कारा ही लगता है. एंड यू थॉट ऑफ द मेकअप्स ऑफ इमेजिन. ऑलराइट, गो टू द वॉशरूम, वॉश बेसिन में जाके स्प्लैश करिए ठंडे पानी से फेस. आई स्प्लैश्ड माई फेस विद वाटर और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना चाहें तो लगाएं आप. अगर आपको लग रहा है इनफ ऑयल फॉर द नाइट तो लेट इट बी. मैं ना तो नाइट क्रीम्स यूज़ करती हूँ ना ही कोई फैंसी अंडर आई क्रीम यूज़ करती हूँ. एंड आई एम ऑलमोस्ट इन माई mid-30s. ऑलराइट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब यूज़ करने से. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं बिकॉज एक बार मैं महंगी क्रीम लेकर आऊँगी एंड देन व्हाट इफ़ दैट क्रीम इज़ नॉट अवेलेबल वेयर माय हस्बैंड गेट्स पोस्टेड, और या फिर मेरे बजट में नहीं आती उतनी महंगी क्रीम हर महीने ख़रीदना या हर 3 महीने में ख़रीदना तो फिर पॉसिबल है. बट हर महीने उतनी महंगी क्रीम ख़रीदना मेरे लाइफस्टाइल को तो सूट नहीं करता है. इसके लिए I like home remedies better, और coconut oil is my first love when it comes to skincare. And I have oily skin, but it really helps balancing, I don't know, something it does. It's miraculously very nice. So don't get into कि मेरी oily skin and I can't use oil. You can, because जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं स्किन के वो कम होते जाते हैं. इट लूजेज ऑल द नेचुरल ऑयल्स. सो इट्स बेटर दैट यू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज आफ्टर 30 स्पेशली. वेरी क्रूशियल. योर स्किन विल लुक ग्लोइंग फ्रॉम विद इन और थोड़ा यूथफुल लगती है बिकॉज इट इज़ वेल मॉइस्चराइज्ड. व्हेन यू मेकअप व्हेन यू वेक अप आफ्टर अ गुड skin care routine, it will look nice. So see, everything is off and looks nice. All right, so I hope this video was helpful. Thank you for watching. Like, subscribe and share.